Forest Life, Chapter 9, Wrap Up. Some people live together, share the same language, culture, and history, and do not live in towns or cities. Ma'am, can you tell us more about their lifestyle? Okay. To discuss the way in which the lifestyle of the people living near forest or on hills differs from the lifestyle of people living in cities. The word forest is derived from the Latin words forest, which means out of doors. Forest हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड ट्रीज जो होते हैं उसे फॉरेस्ट कहते हैं. यहाँ पे पूरा उसका वर्ड्स दिया गया है. लैटिन भाषा में उसे फॉरेस्ट कहते हैं. ओके. ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैसे ज़रूरी है? जंगल. फॉरेस्ट का मतलब ये होता है जंगल, घना जंगल, जो घने, जो उसमें और जो बहुत सारे लोग जानवर रहते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. वो प्लांट्स इन फॉरेस्ट क्लीन द एयर. ग्रीन ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल और गिव आउट व्हेन वी ब्रीथ टू मेक देयर फूड. इन टर्न दे गिव आउट ऑक्सीजन. नो लिविंग बीइंग can survive without oxygen. Forest also provide shelter to wild animals, birds, and different types of insect. They are rich in both plant and animals biodiversities. Tree of a forest help in circulation of water and bringing rain. They also rain water to be absorbed by the soil or ground. Roots of trees hold the soil, so it is not easily washed away in floods and rains. Forest also provides with things like wood, rubber, paper, gum, and essential oils. Forests provide a number of medical plants that are used to make different medicines. For example, the leaves of neem, tulsi, and eucalyptus are well known for their medicinal value. Chinhon and aloe vera plants are also known for their medical values. ये जो है एलोवेरा एंड चिन्हॉन, ये दोनों मेडिकल्स में यूज होते हैं, मेडिसिन्स में. फाइंड आउट हाउ दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स. सब्जेक्ट एंड कॉर्नर्स में हम देखते हैं जनरल ऑनर्स. Make a list of items that we use in our daily lives which are a product of trees or forest. You can mention spice, honeys, medicines, food. It's make the entire in a tables under the following heads: name of item, source of item, use of the item. Tribal life. There are about 645 tribal communities in India. They still live in village in tribes. They are mostly dependent on forest for food and livelihood. They also conserve forests. Their life is closely associated with forest, and they practice many ancient customs and traditional. In India, tribal people are known as Adivasis. Adivasis. The word Adivasis means the first people to live in a palace. ट्रिबल लाइफ के बारे में बात की हमने. देर आर अबाउट 645 ट्रिबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया. 645 ट्रिबल्स हैं यहाँ पे इंडिया में. दे स्टिल इन लिव इन विलेज इन ट्रिबल्स. जो विलेज में, गांव में रहते हैं. दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड लाइवहुड. जंगलों पे उनका खाना और ज़िंदगी डिपेंड करती है. वहाँ से ही वो खाना लेते हैं और अपना जीवन काटते हैं. दे ऑल्सो कंसर्व फॉरेस्ट. देयर लाइफ इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट एंड दे प्रैक्टिस मैनी एशियंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स. वो वहाँ पे ही अपने ट्रेडिशनल्स और अपने कल्चर को जीते हैं. इन इंडिया ट्रिबल पीपल आर नो एज आदिवासी. जो इंडिया के ट्रिबल पीपल्स हैं उसे आदिवासीज कहा जाता है. द वर्ड आदिवासीज मीन्स द फर्स्ट पीपल टू लिव इन अ पैलेस.
The Chipko Andolan, the Chipko movement or Chipko Andolan was a forest conservation movement in India. The word Chipko means to hug or to cling. People embraced trees to prevent them from being felled. The movement organized in Uttarakhand, Himalayan regions in 1973 and later spread throughout the Indian Himalayas. ओके चिपको आंदोलन एक जंगल के ऊपर डिपेंडेड था। उस पे क्या हुआ था कि जैसे ही लीडर लाइक चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा वेर एक्टिवली इन्वॉल्वेड इन द चिपको आंदोलन। द मूवमेंट ऑल्सो इंस्पायर्ड मैनी अदर्स मूवमेंट्स फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। सम ऑफ देम आर द आपिको मूवमेंट इन कर्नाटका, द नर्मदा बच्चो आंदोलन इन गुजरात एंड द Chilika Lake agitations in Orissa. Many communities in India have helped save nature. An example is the Bishnoi community of Rajasthan. In fact, the original Chipko movement was started in the early 18th century by this community, a largest group of peoples from about 84 villages. Led by Amrita Devi, laid down their lives to protect the trees from the being felled on the orders of the king of Jodhpur. After this incident, the king gave an order to prevent cutting down and trees and around the Bishnoi village. ओके तो चिपको आंदोलन के बारे में इस तरीके से था। जब चिपको आंदोलन में जब पेड़ों को काटा गया था तब वहाँ की जो लेडीज़ थी वो पेड़ों से चिपक के खड़ी हो गई थी। ओके एंड deforestation. So deforestation is the removal of a large part of forest so that the land of which it stood may be put to another use, such as for farms, ranches or cities. Deforested areas. Cases of deforestation. Some of the cases of deforestation are listed below. Forest fires. A forest fire is a natural fire in an area with many trees. It is spreads quickly and is difficult to control every year. Such fires burn large areas of forest worldwide. Logging of forest for wood trade is one of the major cases of the deforestation. Infrastructure expansions, construction of a road and a rail network provides gateway to previously remote land. The cleared land then attracts in the infection of shelter and distributes the peace that again once reignited the small village. Mining project often lead to major construction activities such as roads, railway lines and power station, thereby putting for future pressures on forest. Climate change lose the forest is both a case and an effect of changing climate. इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या इफेक्ट होती हैं, तो लूज ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस कैन केसेस द फॉलोइंग. डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर साइकिल. डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट वाटर बॉडीज एंड वाटर टेबल्स व्हेन देयर इज अ ड्रास्टिक reductions in the number of trees and plants. The rate of transpirations also reduce, so the water cycle gets distributed. Loss of biodiversity, both plants and animals get affected due to felling of trees. Their habitats are lost, which may lead to animals becoming endangered. Climate change. Loss of trees leads of global warming and affect the climate of the earth. Okay, here's the Chipko Andolan. The Chipko movement the Chipko movement or Chipko Andolan was forest conservation movement in India. जंगलों से connected है. The word Chipko means the to hug or cling. Peoples embrace a tree to prevent them being felled. The movement organized in Uttarakhand, Himalayan regions in 1973 and later spread throughout
the Indian Himalayas. Leaders like Chandi Prasad Bhatt and Sundarlal Bahuguna were actively involved in the चिपको आंदोलन. ये दोनों चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा ये दोनों इस चिपको आंदोलन में इन्वॉल्व थे. द मूवमेंट ऑल्सो इंस्पायर मैनी अदर मूवमेंट्स फॉर इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन. ये इन्वायरमेंट से कनेक्टेड था. सम ऑफ देम आर द Pico movement in Karnataka, the Narmada Bacho Andolan in Gujarat, and the Chipko Lake agitations in Orissa. Many communities in India have helped save natures. An example is the Bisnoi community of Rajasthan. In fact, the original Chipko movement was started in the early 18th century by the community, a large group of people from about 84 villages, led by Amrita Devi, laid down their lives to protect the trees from being felled on the orders of the king and of Jodhpur. After this incident, the king gave an order to prevent cutting down or of tree in around the Bishnoi village. We connect right to and true false. We get dirty air from forest false. Plus activist is medicines plant true. The Chipko Andolan began 1917. Okay, true. And the Bishnoi community belonged to Andhra Pradesh. False. Logging is the only cases of deforestation. False. Look at here. यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप क्लियरली देख सको. Afforestation, planting more and more trees to renew plant cover or barren land is called afforestation. Planting trees on land where a forest or one existed is called reforestation. जो plants को और से ज़्यादा बढ़ाते हैं उसे reforestation कहते हैं. ओके, तो हम यहाँ देखेंगे वन महोत्सव इज अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. जुलाई के फर्स्ट वीक में ये वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन दिस डेट में स्पेलिंग्स एंड स्पेलाटेड अक्रॉस द कंट्री. कॉर्नर्स में हम देखेंगे डू यू नो व्हाट एन इको सिस्टम इज. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रीजन्स टुगेदर मेक अप इको सिस्टम ऑफ द region. This includes all plants and animals, human beings, water bodies, rocks, and soil of that region. When we plant a tree, we contribute towards make the ecosystem healthy. Start the eco club in your school and undertake a tree planting drive. Every student should grow a plant either at the school or at a home. डिफॉरेस्टेशन कीवर्ड्स जो हैं इस चैप्टर के वो इस तरीके से हैं. डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटना, जंगलों का नुकसान उसे कहते हैं. द रिमूवल ऑफ अ लार्जेज पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट सो दैट द लैंड ऑन विच इज इट स्टूड मे बी पुट टू अनदर यूज सच एज फॉर फार्म्स, ranches or cities is called deforestation. Afforestation, planting more and more trees to renew a plant cover on barren land is called afforestation. Reforestation, planting trees on land where a forest once existed is called reforestation.